नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यशवंत तिवारी, मेड डिवाइस सर्कल में आपका दोस्त और होस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि मेड डिवाइस सर्कल में हम मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री के और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के एक से एक महानगीने को आपके सामने लाते हैं, जिनके ज्ञान का हम यहाँ पे आपसे परिचय करवाते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी अपने जीवन में कुछ उनसे सीखिए। तो आज के लिए हमने जिस मेहमान को आमंत्रित किया है, उस मेहमान का पूरा अनुभव लगभग 18 वर्षों का है। वो है तो एक तमिलनाडु के छोटे से शहर कोयम्बटूर से, लेकिन चेन्नई से बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद वो मास्टर्स की डिग्री लेने यूके गए और उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री वापस उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई से ली। और जैसे कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक के साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक भी चलती है, लेकिन उनका मेन मोटो है ही इज ए टेक्नोक्रेट। तो आमंत्रित करता हूं आज के हमारे मेहमान और हमारे मित्र डॉक्टर ए मुथु, डायरेक्टर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। डॉक्टर मुथु, आपका हार्दिक स्वागत है। So, Yasmin ji, thanks a lot for having me here. Right, it is an opportunity, and it is also an honor to be here with you. And it also makes me think, what better things that we could do in the future together. Right? Thanks a lot for your time. Yeah. Thank you very much for accepting our invitation. आप यहाँ आए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। डॉक्टर साहब, आप कुछ अपने बारे में बताइए। राइट फ्रॉम योर बर्थ, योर स्टार्टिंग स्कूलिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंड हाउ डिड यू कम टू दिस इंडस्ट्री? Okay. So if possible, speak in Hindi. Our audience is very smart; they will understand. Okay, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, but I'll try. बहुत बढ़िया है। बोलिए। Right, so मैं तिरुपुर बोल के कोयम्बतूर से एक टाउन था उस समय पे, बट अभी एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। सो मैं तिरुपुर तमिलनाडु से आ रहा हूँ। मेरा एजुकेशन, स्कूलिंग सब उधर ही था। बढ़िया। देन उधर से बीटेक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी किया था, उसीलिए मैं चेन्नई में पढ़ा ये सब। देन फ्रॉम देयर आई गॉट अ फर्स्ट जॉब इन TCS. Oh, great. Yeah, so I worked for some years in TCS. एंड फ्रॉम देयर उधर से यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड बोल के यूके में एक यूनिवर्सिटी है, उधर बायोटेक एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एक कोर्स आई हैव डन। देन ओबेर बोल के एक कंपनी, उधर थोड़ा काम किया था। देन वापस इंडिया आया। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड दिस डायग्नोस्टिक जर्नी, राइट। सो फ्रॉम इवराज बायो टू लैब सिस्टम्स, ट्रिविट्रॉन, health sensei to STRUmed now. So I think Yuvraj Biobiz is the first diagnostics company in Tamil Nadu. Yeah, there were a couple of companies who diagnostic के अंदर था, but 100% manufacturing company from scratch we were the first one to do. टेक्नोलॉजी मतलब देर आर कंपनीज हु वर मेकिंग बायोलॉजिकल। सो स्नेक पे नाम का एक कंपनी था, राइट। सो देर आर कंपनी हु वर इनटू ट्रेडिंग, बट हम खुद से टेक्नोलॉजी भी बनाए और उधर से प्रोडक्ट भी बनाया, देन उसका अप्रूवल, देन एक्सपोर्ट भी किया। सो फ्रॉम स्क्रैच इट वाज अ बूटस्ट्रैप्ड कंपनी. So we were the first one to get the license. I still remember उस दिन हम ड्रग कंट्रोलर के साथ गया that we wanted to apply for this particular product for manufacturing license. वो बोला इस तमिलनाडु में ऐसा कुछ कंपनी नहीं है और प्रोडक्ट भी नहीं है, आप रेफरेंस लेके आओ, देन हम बात कर सकते हैं. Then I went all the places, I didn't get anything. Finally I went all the way to Goa. So I still remember, thanks to Dr. Tripati and Sriram sir, Tulip. Yeah. So that was the first drug license they from their drug controller I received. वो लेके वापस आया, दिन मैं दिखाया सर, see there is a company who is doing, there are a lot of companies in north they are doing, please let us start. So first product था dengue, malaria and syphilis. So उधर से then rapids में था. So ये सब rapid product का license. Infectious disease products. So then from there we started
I was the first person. With me there were two more people. Then from there we added, it went all the way to about 50-60 people in the factory. So after Yuvraj Biobiz, you went to Lab System, Finland. So Yuvraj Biobiz, I was the CEO and executive director. Okay. After that opportunity, I wanted to do something on my own. Again, it has to be from scratch. So Dr. Velu, he gave an opportunity because they got the facility in Chennai, and they wanted us to manufacture kits, same rapid and ELISA products for them. Biocard बोल के वो name में. Then I got an opportunity to work with lab system people also. Okay. So उस समय पे Trivitron acquired lab systems. Yes. Right. So problem यही था that the cost of manufacturing was very high, and those products cannot be sold in India. So ये contract बनाया that we wanted to transfer the technology from Finland. The same products to India. So I was under a contract for about 3 years. Then I handled product development, technology transfer, and indigenization of those products in India. Okay. चूंकि आप टेक्नोक्रेट है और आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फिनलैंड से इंडिया में करवाई है बायो सिस्टम की ट्रिविट्रॉन के साथ, तो व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड ड्यूरिंग दैट technology transfer period? Sir, technology transfer है. How it happens, just for our audience to understand what happens? No, see, technology transfer में दो sides है. मतलब one will provide you the technology, the other one will be the recipient. मतलब वो for example उधर से देने के लिए तैयार है, but इस side में भी कुछ understanding होने के बंदे चाहिए ना. So without which it will not happen. वो पहले चीज ऐसा है that you need to have that balance, right? So when you acquire the technology or when you acquire the company for technologies, that's the thing. Fortunately, I had experience with working with multinational companies and multinational projects. For example, I'll give you, before I worked for a project called NIH National Institute of Health, US. उनका newborn में obstructive uropathy. मतलब newborns will not even feel and they can't even tell you that there is a problem. Yes. Right? So उसका urine based test develop करने का वो approach किया था. Right? So that's my first project to get into this multiple multinational collaboration or kind of getting into a foreign contract, all those things. That's the first contract what we got. Then we developed those products. We worked closely with multiple child hospitals. Chennai में अड़यार में थोड़ा 3-4 hospitals था. So this I'm talking about 25 years back. Yeah. So then that's the first project to start. So from there I worked with Ideal Biotech बोल के उनका भी एक requirement था that they were into urinary bladder cancer product, and at that time, this is again 20 years, not even 20 years, 10-15 years back story. They wanted to make something, a better version of it. So उसका opportunity भी मिला. और इसके बाद then even in Yuvraj Bio, right? So the technology development or the quench for that to develop something from scratch. Right? Yes. So I don't know, from the beginning it was there. It was there. So even during the college hours, if you ask people, my friends, they say, what do you want to do? I say, I wanted to start a biotech company. So I somehow wanted to spend time in developing all those skills. But as coming back to this question, why I'm mentioning all those things is because it is, people think, okay, उधर टेक्नोलॉजी है वो सब acquire करो और you write it down in paper, give it over, right? So that's not happen in the real world, right? So you will have to overcome people's insecurity. Let's say, for example, some company acquires a smaller company or a non-performing company for the sake of technology. उसका core people है, उसका they will have something in their mind. दिमाग में से है that मैं सब कुछ दिया तो correct.
what will happen to I'll me? be left with nothing. So that will be the first mental block to establish with them as a friend. I said, it is for a developing country, and ensure that they will also feel Correct. happy. Second is that despite everything is there, black and white, right? Yes. That's Finland, this is India. That's Sweden, this is India. It's True. US, this is India. True. Sab kuch alag hai, right? Correct. So you need to figure out every single thing. Where are the hurdles, right? Correct. Why it is not happening? Correct. Even though everything is in paper, things will not work out in real time. Very true. So every single point you have to think through, go through, fix those hurdles, then you move on. So that's one of the main things that we faced, other than multicultural shock, right? That's the thing. And insecurity. Third is this our technology itself, right? So you need to set the projects in multiple phases and stages, and आप ये एक स्टेज पे then okay क्या किया हम, क्या करने वाला हूँ, और ये कैसे ये कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा. सो ओवरनाइट. तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो प्रोसीजर होता है, तो इन दैट प्रोसेस देयर इज हैंड ओवर एंड टेक ओवर. हैंड ओवर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज हैंडिंग ओवर टू द organization which is taking over. There should, both the sides, there should be competent people to understand the exact transfer and every method. Yes, this is how it goes. Yes, say for example, many a times another को एक equipment चाहिए, right? China से और Germany से और any country for sake, right? So many a times if that technology is for sale, मतलब वो 30 साल और 40 साल का पहले टेक्नोलॉजी. करेक्ट. राइट. सो वो लेके आप क्या करना चाह रहे हो? करेक्ट. वो भी इम्पोर्टेंट है. द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग दैट टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द यूटिलिटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड to that technology to this organization. So I always have an connect with not just the technology, उसका commercial value क्या है? Commercial value is right? important. So वो commercial value और उसका demand इधर क्या है, right? So developed countries में एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल रहता है ना सर, राइट? सो वो 20 साल 30 साल इसके बाद वो कंडेम कर देते हैं, स्क्रैप. या राइट. सो दोस थिंग्स व्हाट आर वी गोइंग टू गिव यू, राइट? सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट, राइट? सो व्हाट चेंजेस दैट्स गोना मेक, राइट? सो इज देयर अ डिमांड, राइट? सो डू रियली पीपल वांट दैट? कुछ का रिक्वायरमेंट में नहीं है तो देन वो वेस्ट है ना सर. ट्रू. एक्वायर करने के लिए कॉस्ट है, यस, राइट? टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट? सो टाइम गया तो देन वी विल रियलाइज ओके इतना स्पेंड करने के बाद भी, राइट? सो वो मटेरियलाइज नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीस फैक्टर्स दैट वी ऑलवेज सी फॉर व्हाट्स देयर फॉर अस फ्रॉम देम, और एल्स nowadays our approach is totally changed. Yes. हम rather than acquiring something, now we are in the phase of developing from scratch. Correct. उसका टाइम लगता है सर. R&D का एक्सपेंडिचर है, वो करना पड़ेगा. बिल्कुल. टाइम भी आप देना पड़े, then you can definitely make, because इंडिया में इतना टैलेंट है, right? We can easily make things. Problem is that we have to start somewhere. Yes. Failure is a part of the story, but failure is not the opposite of success. Failure is a part of success, and you have to go through that. Yes. You have to go through that. Yes. बिल्कुल. So these are all the things that that तो एक्विजिशन जब होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, तो उस समय हमें ये भी देखना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होकर के आ रही है हमारे देश में, इट may be an obsolete technology for that particular country. Yes. If it has not existed in India, it may be a new thing country. For us. Yes. But it has been existing, then it's not required. Yes. And you can also think, for example, अभी US में, मैं when I was in UK, मैं diagnostic industry का आने के लिए एक very सबसे important factor मैं बताऊंगा, that there is a pharmacy called Boots. Yes. Okay. So UK में बहुत popular pharmacy like Apollo Pharmacy and things here. So I went there. I picked up a card. मतलब वो pregnancy card था उस समय पे. It said 10 pounds.
Oh. right? So, but this I'm talking about back in 2000, right? So Then also it says 2000 also the it 10 was pounds means it 10 is- pounds, and I said that was a cartridge. And it says 10 pounds for a customer. Then I came back home, right? I started working out reverse engineering all those Yeah, things, yes, right? yes, It yes, boiled down to me, say about 200 rupees. Us समय पे, right? So Yeah, put yeah. everything to 200. और 203 मतलब 3 pound का Yeah, equivalent है, yeah. right? So 3 pound का product है, right? They're selling at 10 pounds. It is Yes. 3 times than what, True, 2 true, times than what it is, right? 2 to 3 times. So the main thing is that, we can also make India, if somebody is into technology, we can also think of how to make this thing cheaper, how to make things more affordable. I don't say use the word cheaper, it's not the appropriate. Economical or affordable. Correct. And re-export to the developed countries under license. That's True, also one of true, the areas that we work on, because those companies in Europe or US, they also wanted to get rid of those kind of technologies. Uska life cycle ho chuka hai, that I don't want to waste money, because uska labor cost Yes. bada hai. So then they wanted to hive off those things. We can also think of on that aspect. So these are all the things that So you have like to Britishers consider. were doing that during their time. They were taking the raw material from us. They were making the finished product there in their country Yes. and reselling it to Yes, India. to India. Yes. So Yes. similar kind of Yes. thing can be Yes, done we can. if We for have to do. medical devices or also. Yes. yes. IVD Good also. suggestion. Yeah. So this we can think of, because, sir, pharma mein, right? We are the hub, Yes. right? So we Yes. are the number one. So our goal, in my personal view, right? If I've been given a chance, I'm even still thinking of, when you guys do such a wonderful job, I also wanted to contribute. मेरे को India wanted to be the number one in diagnostics. Yes, sir. Right? We wanted to be the number one in diagnostics. मेरे LinkedIn में भी है that Yes. self-sustainable or self-reliant India. मतलब Yes. हमारे पास सब कुछ है, right? So the way how pharma contributed to the world economy, right? So similar way diagnostics है, तो then we wanted to represent as a whole. So I'm even thinking of how to work with my friends and manufacturers in the country to make a hub, right? So that all those developed countries that can use this, because barring exports, barring अपना local requirement, still हमारे देश में बहुत capacity है. बिल्कुल. वो capacity भी हम use कर सकते हैं. That that will be an additional revenue, and it will also change the world how they see India in the diagnostic segment. So that's why technology plays an important role. चूंकि बात निकली है तो मैं भी बता दूं कि मेड डिवाइस सर्कल का मेन पर्पस ही वही है, to ensure to consolidate the entire industry and ensure that the India becomes the medical hub in IVD or diagnostic industry. And this podcast is only one of the shortest parts of that entire med devices project. Yes. So we are all in bits and pieces. We have to come together to make this happen. Right. We, for example, even now when I get some enquiries for the products which we don't manufacture, I still pass on to my friends. Oh, great. Right. So that's how I work. Correct. So in those kind of situations, when for me, a small player in such a big world, right? So we are getting so many inquiries for us, right? Likewise, if we put all the small stones in that basket, right? Yes. We can easily make it a successful chapter, but for which we have to come together to correct. Get things. So in STRUmed, what all products do you manufacture in India? Medical devices में? Sir, we manufacture high-tech IVD products. We started with ESR, to be frank, right? So ESR, erythrocyte sedimentation rate. Yes, right. So if you see in India,
I think the hardcore manufacturers from the scratch. I think we are one of the leading companies who make those products. I don't think We anybody started- manufactures ESR except we use that manual method of tube. Yeah, yeah. So 1 hour and put alarm and check yes. So sedimentation rate. yes, sir. So there are few other companies that they assemble it, but from the scratch, if you see Okay. the technology development Okay. and product development, Okay. engineering, and hardware, software, embedded, everything put together, done in the country. I always proudly say we are not make in India. We are not. Our products are not made in Gujarat. It is made in Surat. Oh, great, great. So Great. so everything is done and dusted from Surat only. Very good. So we started with ESR because if you see, sir, we wanted to start from the base parameter and to go upwards. Very good. So ESR is the very base parameter. Very Even yes, now, yes. if you go now any inflammation, anything, the first thing doctor writes is ESR. Yes, sir. Yes. That's the base parameter start. So ESR we started. Then When did you start manufacturing ESR? 2021, sir. Okay, good. 2021 we started with ESR analyzer. ESR में 2 वेरिएंट्स है हमारे पास, एक सोडियम स्ट्रेट वर्जन है और दूसरा EDTA, मतलब डायरेक्टली आप बैक ट्रेनर से रीड कर सकते हो, वो 20 मिनट का रिजल्ट देते हैं. Okay. So we are the first one in the country to do Okay. such equipment. Okay. And if you see in a That global ESR stage, analyzer जो आपका है वो CE marked है. हाँ sir. Okay. Yeah. Apart from that ESR analyzer, you have some other products also. Yes, sir. instrument. We have ESR analyzer. We have urine analyzer. We Okay. are the only Indian manufacturer who makes urine analyzer. Okay, so we have 13 and 14 parameters, and Okay. it can also. We are the only company who can give ACR/PCR ratio also Okay. in the urine analyzer. We have barring ESR and urine analyzer, we have coagulation analyzer. Okay. How many channels? Single channels. Single channel, okay. We have fluorescent, India's first fluorescent immunoassay analyzer, which Yes. we launched all by ourselves. Hardware, Okay. software, reagents, everything we Indigenously manufactured. इंडिजिनस है, हम इधर ही बना हो. So Okay. मतलब वो हमारे फैक्ट्री में ये 2 फ्लोर्स है, एक फ्लोर डेडिकेटेड फॉर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा फ्लोर में सब कुछ वो रिएजेंट का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है. सो FAAB और कोगुलेशन और इसके अलावा अभी लॉन्च किया नेफ्लोमीटर. Oh, great, great. Yeah, so these are all the product lines. You may ask, okay, हम ये point of care, because अब product देखा तो ये सब मॉड्यूल्स में छोटा छोटा प्रोडक्ट्स है, क्यों ये छोटा प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ, राइट. हाँ. सो ऐसे नहीं है, राइट. सो टेक्नोलॉजी में 2 पार्ट्स है सर, वो कोर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एफर्ट्स. Yes. मतलब अब देखा तो इफ यू डीप डाइव एंड सी आर प्रोडक्ट्स, हम STRUmed में अभी ESR, हाँ. ये product, if you see in India, we are the number 1 officially. Yes, yes. Right. So with the number of products, we have more than 2,000 installations in the country. We are exporting to Europe. We are exporting to Great. Central Asian countries, Kyrgyzstan, Very good. Kazakhstan, those places, Africa. Yeah. We do a lot, and even South America. Right. So Fantastic. all our products now is CE marked and USFDA approved. Oh, great. Okay. So the reason is that, if you see all these products being small, right, but the technology is totally indigenous. मतलब हम खुद का ये सब टेक्नोलॉजी बनाया है, बिल्कुल, बिल्कुल, right. So बिल्कुल. उसका पावर क्या है वो मैं बताऊंगा, right. So the same ESR analyzer, आपके पास टेक्नोलॉजी, हमारा खुद का टेक्नोलॉजी बना है, right. Then making a 20 test or 200 test, Yeah. ये सब engineering effort है, Yes, yes, yes. right. So वो throughput का yeah, right. So whether you wanted to serve a smaller B, C and D class customers who are having a small workload, right, उसका हम already ये सब बन चुका है, right. बिल्कुल. Making it for the bigger players, right, who has 1,000 का samples है, throughput चाहिए, वो सब engineering efforts, because technology है तो, say for example, I'll always say connect this with kitchen, Yeah. right. So you establish the kitchen, right. वो kitchen में आप stove है, groceries है, provision सब है, right, और chef भी है, right, और वो establish कर दिया. Okay. अभी आपको पास्ता चाहिए, वो 20 मिनट का काम है. Yes. आपको बिरयानी चाहिए, वो भी Yes. 20 मिनट का काम है. ऐसा है that we have
taken a modular approach, मतलब वो टेक्नोलॉजी और इसका मॉड्यूल सब ऑलरेडी बन चुका है सर. बिल्कुल बिल्कुल Right? ग्रेट. अभी आपका क्या चाहिए, इस वो प्रोडक्ट के ऊपर हम ये मॉड्यूल लेके हम इजीली स्केल अप कर सकते हैं. मतलब बिल्कुल सही बात है. थ्रूपुट, कितना थ्रूपुट चाहिए, उसका प्रोडक्ट अपस्केल करना, डाउनस्केल सब कुछ कर सकते हैं. बिल्कुल मतलब बिल्कुल कोर टेक्नोलॉजी आपके पास है तो यही एडवांटेज. बिल्कुल बिल्कुल. So you can serve both the sides, yes right? yes. So उसीलिए for example if you see the same product, हमारा ये ESR सबसे पहले प्रोडक्ट था. So वो प्रोडक्ट अभी इंडिया में भी हम भेज रहे हो. So I said more than 2000 installations we have. We are exporting it to developed countries also. Yes, 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 yes. Right? So I always proudly say we are the first company to export to South Korea. Yeah, great. It is a remarkable achievement for India also, no? Yes. We are manufacturing the product, engineering the product over here, yes. and exporting it to other countries. Yes. And on that ground, I'll request my viewers to thank STRUmed because STRUmed is the first only Indian company as of now which has entered into the urine analysis business. There, when you are the only one which has dipped the hand in urine business. Yeah. Otherwise, people they import and sell. Yes. Second thing, ESR analyzer. Although in most of the laboratories, in 90% of the laboratories in country, people use the manual method. You are bringing automation in that. Yes. So you deserve a big congratulations for that. Thank you, sir. Thank you. So it is a team effort. Yeah. So even though I hail from IVD background, it also my friends, my partners, my colleagues play a big role in this particular. Yes, it is success. always a team effort. Yeah. So we usually what happens when you invite your friends at your home for the lunch or the dinner party, you throw a party, people like delicious food and they thank, but there is a person behind who makes there is a lady who has put effort, sweat, blood, everything in making the things better and tastier for you. So we request we would like to thank them also. The team behind it. Dr. Muthu ji, sir, आप तो एकदम टेक्निकली साउंड पर्सन है, आपकी पर्सनालिटी में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, लेकिन ये सेल्स में कैसे घुस गई, उसकी स्किल्स आपने कैसे एक्वायर की, क्योंकि सेलिंग भी जरूरी है करके? ऐसा नहीं है सर, वो आई थिंक इट इज फ्रॉम द स्कूल से वो शुरू किया है. मतलब स्कूल में हमारा स्कूल में मैं कोयम्बटूर स्कूल में वी हैव दोज इयर्स वी यूज्ड टू हैव अ सेल्स डे. Okay. Matlab, this I'm talking 30 years back. Okay. So we used to have a sales day where all the students used to make something and sell to other people. Oh, great. So udhar se shuru kiya, right? Training udhar se shuru kiya. Okay. Then slowly when you get into the business, right? First aap product banaya, right? Next kya hai? Correct. Right? So whatever you say, right? Product वो अच्छा product है, but marketing नहीं है, then it will do. So my education, especially masters, and I've done masters in biotech and business, right? So entrepreneurship and business. So that helped me to gain boost this particular thing, because it is like a tailor-made course, sir. Yes. मतलब मेरे को एक ही request था, right? So when I finished this course, I wanted to be an entrepreneur with all thing covered, right? Okay. मेरा professor का question भी यही था, right? Before he was signing off for my graduation, right? Okay. So he asked me, Muthu, are you done? Right? Are you can manage everything on your own? Yeah. Then we will go for it, or else you extend the course. Correct. Right? So that's one of the things, because at those early ages, they let me sell. I brewed my own beer. That's the first project in the UK with totally a foreign country. I brewed my own beer, labeled it, bottled it, took this to all the restaurants, sold it. I think we sold about close to those years, say about 4,000, 5,000 pounds का sales भी किया था. And that gave the confidence. Then from there, all these companies, if you see that, all are bootstrapped from scratch. Okay. So उधर option ही नहीं है.
राइट. और प्रोडक्ट बनाया इसके बाद क्या है वो पहले सोच के आप बनाओ, देन आप सेल्स करो. सो दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड. तो इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के लिए शिक्षित होना जरूरी है, तो लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ प्रशिक्षित होना भी बहुत जरूरी है. वेल एजुकेटेड एंड वेल ट्रेन्ड. यस. बिकॉज़ आपका रियल लाइफ में क्या होता है उसका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर चाहिए. Right, so आपका for example you are there in college or you are doing some technical work, right? So you always end up with something, right? So but to what's next, right? So until otherwise that's not commercialized, correct, right? So my education was that, sir. Right? How to make because the masters पढ़ा है ना, ये master का यही essence है, that how to develop a product from scratch, commercialize it and sell it, and how to run a profitable business. वही मैं learn किया. I think last 25 years that's what I've been doing real time also. And I personally believe that this is my personal belief system says that कि every person in this world, on this globe, is a salesperson. Whether he be a teacher, whether he be an architect, whether he be an engineer, whether he be a homemaker. Yes. What happens? Teacher sells education, architecture sells plan, labor sells his hard work. Correct. A homemaker lady, she sells her good stuff and gets some money to run the family. This is how this salesmanship works in the world. Yes. Right. This is my personal belief system. Yes, we'll go to the next question. Yes, sir. Okay, Dr. Muthu. Yes, sir. आप ऑब्वियसली स्मार्ट है, हैंडसम भी है. आपकी उम्र कितनी है? सर 41 है अभी. ओके. और इन 41 ईयर्स में आपने कितने देशों की विदेश यात्राएं की है? लगभग 40 के आसपास रहेगा सर. ओहो, तो बढ़िया. तो उम्र के साथ मैच खाते हुए जा रहे हैं आपकी विदेश यात्रा है. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. तो इन 41 वर्षों में आपने जो बाहर की टेक्नोलॉजी की जानकारियां ली, CX सर्टिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपने जो अपने कंपनी में इन हाउस डेवलप्ड प्रोडक्ट है आपके, जैसे यूरिन एनालाइजर हो गया, ESR एनालाइजर हो गया, नेफ्लोमेट्री हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके क्या CE सर्टिफाइड है? हाँ सर, सब कुछ सारे. ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर CE सर्टिफाइड और US FDA अप्रूवल भी है. US FDA अप्रूवल. ओके. तो STRUmed कंपनी क्यों US FDA अप्रूवल के लिए गई? ओके सर, हमारा विजन भी ऐसा है that we wanted to be Siemens of India, Roche of India, right? Great. So that's what we dream to be, because India से if you see a lot of foreign companies are here in India, but we have very limited companies who have a very good presence in other countries. So correct. ये एक चीज है. दूसरा, if all our market research, right? So India का market size है about not IVD का market size है is about $110 billion. मतलब medical device का है. Medical device का if you put everything together that's about $600 billion. Yes. This is 2020-23 का data, right? अभी I think it goes at 5.3, 5.4 CAGR. But medical device ka market is about $600 billion, in which IVD is $110 billion. Because with all these medical segments, X-ray भी और imaging भी और prosthetics, ये सब डालने के बाद भी, right? So we are in the top of the segment, right? So 110 out of 600 is a big chunk, right? Big, yes. So again, if you do a little more research, okay, वो $110 billion डॉलर बिजनेस कहाँ है, राइट? हाँ. वो ब्रेकअप करके हम देखा, बिकॉज STRUmed में सर विदाउट डेटा वी विल नॉट टेक एनी डिसीजंस. मतलब सब मार्केट रिसर्च है. मार्केट रिसर्च होने के बाद वो नंबर्स आने के बाद देन वो कहाँ होता है, देन उसके वजह से हम डिसीजन लेते हैं. ओके. ऐसा नॉर्मली दैट गोज फॉर ऑल द कंपनीज. Those who manufacture make products here in their own facilities. No, it is one of them. Okay. For maybe many companies, I'm not sure, but I'm talking about STRUmed. STRUmed में without data we will not proceed. Okay. वो data का 100% assurance और reliable data है, तो then उसके वजह से हम शुरू करेंगे. First चीज मैं ऐसा बोला, $600 billion में 110 IVD में है, right? So $100 billion का ब्रेकअप आप देखा तो इंडिया का बिजनेस है
2%, sir. Oh. Yeah, right. So China almost 6-7% लगभग है, Yeah. और लैटिन अमेरिका भी 7-8% के अंदर है. बाकी 70% बिजनेस कम्स फ्रॉम US एंड यूरोप. Okay. राइट. सो वो एक मेजर ब्रेक थ्रू है. राइट. सेकेंड इज दैट 70% उधर है, तो देन उसका रेगुलेशन क्या है. राइट. उसका सर्टिफिकेशन क्या क्या चाहिए. राइट. सो वो बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग. राइट. वो वर्ल्ड क्लास में आप लेके जा रहे हैं, तो राइट उसका सर्टिफिकेशन भी चाहिए ना. बिल्कुल. कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट व्हिच आई कांट इवन सेल अभी. सो it is market driven approach, and to commercialize and to get a better mileage हम उस टेरिटरी में आप भेजना पड़ेगा. सो भेजने के लिए ये रेगुलेशन मैंडेटरी है. ओके. तो यूरोपियन कंट्रीज में आपके प्रोडक्ट्स आसान बिक पाए, इसलिए आपने यूएस एफडीए और सीई मार्किंग सर्टिफिकेशन इन सब चीजों के लिए कंप्लायंस लिया और सारे मेहनत किए हुए हैं. हाँ सर. हाँ. तो इंडिया इज वन ऑफ द मार्केट्स, नॉट द सोल मार्केट. इट इज नॉट ओनली द सोल मार्केट, बिकॉज अभी थोड़ा ये 3-4 years के पहले आप देखा तो हमारे पास सेल्स टीम ही नहीं था. Okay. It was just me. Okay. Right. So we were working with multiple partners in the country. Okay. On OEM business. Okay. Only since last year we have started our onboarding people. Yes, onboarding people. So okay. Yeah. बहुत बढ़िया. आपने यूएस एफडीए ले लिया, सी मार्क्स ले लिए. Yes sir. तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं. हाँ. जो यूएस एफडीए या सी मार्क के लिए नहीं जाती, तो वो क्यों नहीं जाती? क्या उनको नहीं बेचना है वहाँ पे? इतना बड़ा मार्केट है फिर भी नहीं करती है. ओके. सो वो आंसर वो कंपनी और इसका प्रोडक्ट के ऊपर है सर. ओके. राइट. सो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू है, और वो प्रोडक्ट वो टेरिटरी में किधर रहते हैं. हाँ. वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ. वो जरूरी है सर, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन आप फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी कंपनीज हु हैव सीई मार्किंग फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स. ओके. आप उधर बेच सकते हैं, एक क्वेश्चन है. हाँ. राइट. बिकॉज वो कंप्लेंट्स का फॉलो करने के बाद वो उधर तक पहुंच के उसका कॉस्ट भी है. करेक्ट. राइट. सो आप मेहनत भी करना पड़ेगा, और उसका ऊपर परेशान भी करना पड़ेगा टू गेट टू दैट एक्सटेंट. राइट. ओके. नॉट everyone is ready to take that challenge. Yeah, sometimes, and it also involves significant investment to there. And most important thing is getting there is easy. आपके पास पैसा है, then आपका टीम भी है, and you can work on this particular thing and get things done. इसके बाद क्या है, वो commercial terms आते हैं ना सर. ये सब करने के बाद, right, आप जर्मनी फॉर एग्जांपल सीमेंस के साथ आप जर्मनी में compete कर सकते हैं. एक क्वेश्चन है ना. बिल्कुल, ये भी देखना पड़ेगा. बिल्कुल. ओके. सो उस काइंड ऑफ प्रोडक्ट भी एक प्रायर और एक क्राइटेरिया है सर. राइट. आपके पास वो काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स. सो इफ यू हैव अ मी टू प्रोडक्ट वेयर एवरीवन इज सेलिंग, spending that is a little tricky, because उधर भी और इधर भी एक ही क्वेश्चन आते हैं दैट नो इसका कॉस्ट कितना है. बिल्कुल. कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एवरीवेयर. या राइट. सो यू कांट गो बियॉन्ड अ पॉइंट. यस. राइट. सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है दैट नो. ओके. तो इंडियन कंपनीज जो है वो यूएस एफडीए या सीई मार्क इसलिए नहीं लेती है क्योंकि वो लेने के लिए एक बार मेहनत करके, पैसा खर्च करके, इन्वेस्ट करके ले भी ले, उसके बाद वहाँ के जो लोकल प्लेयर्स है उनके साथ कॉम्पीट कर पाना उनके लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए वो नहीं कर. Yes, that may be according to me, opinions differ. हाँ, but ये कारण हो सकता है. हाँ, ये कारण है that फर्स्ट इज दैट वो मार्केट साइज और मार्केट एक्सेस ये धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा. ओके. राइट. सो फॉर एग्जांपल इफ यू बिल्ड दिस इन साउथ ईस्ट एशिया, राइट, सो उसका अफ्रीका, ये सब करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा. देन प्रोडक्ट का इतने सारे कंप्लायंस कर सकते हैं, इजीली हो सकते हैं, इजीली कर भी सकते हैं. इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड है. बट आप यूरोप गया, देन अभी नया रेगुलेशंस है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है. इसके बाद उसमें क्या है, प्रोडक्ट बेचने के बाद आपका मार्केट सर्वेलेंस भी होता है. ओके. मतलब
क्या बेचा, कहाँ बेचा, ओके राइट, उसका कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट आप कैसे अटेंड किया, ओके वो कंप्लेंट आए तो उसका प्रोटोकॉल क्या है, ओके उसका आपके पास बंदा है, राइट, और कम्युनिकेट करने के लिए कुछ बंदा है उधर, और एजेंसी है, ये सब आते हैं सर. सो इट टेक्स, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. सो ओके, तो वो भी है. सेल करने के बाद पोस्ट सेल्स attending the complaints and Yes. providing services is also Yes, important is very, there very important. Very, very from important. manufacturer's point. Manufacturer point. Yes, Okay. right. और एक चीज भी है that we have very limited equipment manufacturers in our country. Okay, हाँ वो भी है बिल्कुल, because हमारे पास बहुत reagent manufacturer है सर. हाँ so वो कर रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. Whoever is there, who are making their reagents, everyone is exporting. Yeah. They are doing. वो इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट में थोड़ा लिमिटेशन है. तो मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, वो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ सर. ओके, तो मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे एनकरेज करने के लिए क्या करना चाहिए कि वो लोग एनकरेज हो, मेडिकल डिवाइसेस बनाए और टुमारोज इंडिया शुड बी मेडिकल हब, मैन्युफैक्चरर्स प्लेस हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को सर? उसीलिए हम ये एक और ये important point why we started STRUmed is because we wanted to be the front face for that transition. Okay. Right? हम ऐसा नहीं है that okay we wanted to we only wanted to do, right? हम एक छोटा सा कंपनी है, राइट. सो मैं भी, राइट, हमारा पार्टनर्स भी साउथ इंडिया से इधर तक आया, राइट. हाँ. सूरत आने के बाद ही मैं हिंदी सीखा सर. इसके पहले हिंदी नहीं आता है मेरे को, अभी भी 30% है, राइट. नहीं, बहुत बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं. हमारे दर्शकों को जब तक समझ में आ रहा है तब तक बहुत बढ़िया है. कुछ गलत किया तो सॉरी, बट एक्सक्यूज मी. बट वो when we could do, right, so everyone can easily do. We wanted to be an example. We wanted to set a standard so that we really wanted our friends, we really wanted our well-wishers and people in the industry to make new technologies in the country. Okay. So that we can go and conquer the world. Yes. So why did you choose Gujarat? You should have got these facilities there in Tamil Nadu also. Yes. Why did you choose Gujarat and that too specifically Surat? Yes, sir. So any specific reason? हाँ sir, I'll tell you. We actually started from Coimbatore. Yeah. So then Coimbatore is the first choice because of the limitation and talent pool. So we decided, we first criteria is that हमको tier 1 city में नहीं रहने सर. Because tier 1 में क्या है that मैं चेन्नई में रहता था उस समय पे. It takes about 1 घंटे और 1.5 घंटे लगते हैं सर ऑफिस टू ट्रैवल करने में, और 3 घंटे ट्रैवलिंग में चलते हैं, राइट. सो वी डिसाइडेड व्हेन वी वांटेड टू डू समथिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी इज वी नीड टू हैव सम बैलेंस एंड वी नीड टू स्पेंड मोर टाइम बोथ द साइड्स. करेक्ट. सो इसीलिए टियर 2 चूज किया है हम. सो टियर 2 में पुणे, मैसूर, कोयम्बटूर, ये बड़ौदा भी चूज किया. Oh, right. So then we started our journey. We started exploring all those places. मेरा partners, they were there in Mysore for about 20 years. So that's kind of a boredom place now. So we wanted to do some other place. So Pune try किया था. So Pune, when we evaluated, it was not tier 2. In fact, it is more closer to Mumbai. One only. Yes. Yeah. So then we started our road trip from Mumbai to Ahmedabad. Okay. So there are few other factors that why we considered Surat, because I was the last one to hop on in this particular thing. But when my friends, they were partners, they were traveling. We had few criteria to decide on. One is the talent pool. Correct. Right, because thanks to the companies like we have a few companies in Vapi, few companies in Sachin, Surat. Yes. Right. So that gives us a talent pool, and thanks to textiles and diamond, where the Surat is completely connected, so that I can Surat से India में
कनेक्टिविटी इजी है। हमारा प्रोडक्ट्स इंपाल में भी है, भुज में भी है, कश्मीर में भी है और कन्याकुमारी में भी है, राइट? सो वी कैन इजीली एक्सेस द थिंग एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यस, अक्रॉस द कंट्री। और थैंक्स टू डायमंड्स दैट हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सर डायरेक्टली, आई मीन थ्रू मुंबई होता है, बट यू नो इट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट। एंड we have all one girls at home, one girl at home, right? So we all four friends, we have one girl at home. So security is also one. Surat seems to be very vibrant and promising. Yes. And most importantly, food, right? So so what are the food habits you have developed after going to Surat? ढोकला, खाखरा, सो सर फाफड़ा। हमारा घर में ऐसा है दैट नो हम दोनों, मैं और मेरा वाइफ, राइट? सो हम दोनों साउथ इंडियन है, right? मेरा बेटी है सो 100% गुजराती। सो मॉर्निंग उनको फाफड़ा चाहिए और ढोकला चाहिए। करेक्ट। और हर संडे हम 9:30 जानी लोचे बोल के फेमस शॉप है, उनका गुजराती फूड ही पसंद है। सो दैट्स द थिंग। सो फूड के मामले में तो गुजरात इज नंबर 1, वन इन दिस कंट्री एट लीस्ट। सो any nook or corner you go, good Gujarati food. Yes. So I'm a teetotaler, so at least food we need to have a versatile option. Yes. उसके लिए then we boil down to Surat finally. So it is people are very helpful and they are business oriented. And Gujarat to bhai, every person is a businessman. It flows in their DNA. Yes. Business flows in their DNA. Yes, sir. Right? Even if you see, we are a very small company, but हमारा ESR, हमारा CM है, गुजरात का CM Honorable Chief Minister भूपेंद्र पटेल, वही लॉन्च किया। Okay. Yes. So you are getting good support from state government. Yes, sir. Because they see that people have moved from different part of the country to here, and thanks to GSPTM, they are also very very supportive in this particular thing, and we are so blessed to have such kind of location, food, business. So everything is happening in a good way. Yes. बढ़िया। Okay, डॉक्टर मुथु, आपको गुजरात बहुत पसंद आया, वहाँ का खाना पसंद आया, परिवार को भी बहुत पसंद आया, वहाँ की सरकार से आपको सपोर्ट मिला। अब हम जानना चाहते हैं कि आप मेनली आपका जो बिजनेस है, यू आर नॉट सेलिंग इट डायरेक्टली टू द लेबोरेटरीज और द कस्टमर्स, यू आर मेकिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन OEM बेसिस। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, एज ए व्यूअर, इफ दे वांट टू अप्रोच यू फॉर OEM प्रोडक्ट्स, आर यू ओपन फॉर इट? क्या उसके लिए आप तैयार हैं? यस सर, वी आर। टू बी फ्रैंक, वी स्टार्टेड दिस बिजनेस, हम OEM से शुरू किया है। ओके। राइट। सो 2021 से हम OEM कर रहे हैं सर। वी हैव लॉट मेनी कंपनीज इन आवर विद अस हु आर OEM पार्टनर्स। सो OEM में हम सब प्रोडक्ट्स हम OEM कर सकते हैं। इंडियन पार्टनर्स भी है? ओके। सो we have Biosystems, we have Beacon Group, we have Agape, we have Medsos Ozone, we have हमारा Oscar, right? So we have a lot many companies. Fujifilm भी हमारा OEM partner है, वो Japanese company है, but they have tied up recently हमारा OEM partner है। तो हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग तो आपके कस्टमर हैं ही। हाँ सर। और आपका कस्टमर बेस एक्सपांड करने के लिए आप ओपन है, अगर वो आपको अप्रोच करना चाहे तो? यस सर। सर व्हेन वी डेवलप द प्रोडक्ट सर, we are totally open for this OEM. Okay. But OEM में 100% हम कर सकते हैं सर, totally. Okay. तो व्यूअर्स देखते रहिए, डॉक्टर मुथु तैयार है OEM पे अपना प्रोडक्ट देने के लिए। उनका नंबर स्क्रीन पे अवेलेबल है, जो भी करवाना चाहते हैं आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। ओके डॉक्टर मुथु, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एज एन OEM मैन्युफैक्चरर को क्या क्या फायदे और नुकसान होते हैं OEM बिजनेस में? पहले फायदे फिर नुकसान। ओके सर, फायदा ऐसा है दैट हमारा ब्रांड विजिबिलिटी है, मतलब ब्रांड मतलब कंपनी का नाम बेटर रीच होता है OEM में, राइट? सो दैट इज वन एडवांटेज। दूसरा है दैट इट्स एन एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम में, राइट? सो आपका रेगुलर बिजनेस एक्सपोर्ट भी छोड़ के OEM बिजनेस एक अलग सा एक
रेवेन्यू स्ट्रीम है. सो ये Okay. दोनों एडवांटेजेस है. और नुकसान यही है दैट हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कुछ नहीं कर सकते हैं. दैट आई हैव वेरी लिमिटेड कंट्रोल ओवर. Yes, you are solely dependent upon your business partners. बिजनेस पार्टनर्स एक चीज है. दूसरा आप OEM 100% OEM रेवेन्यू में आप रिलाई होता है तो then everything is in one basket, right? Yes. So it is quite difficult in terms of आपका वो MOQ नहीं मिला और ऑर्डर उनका ट्रैक्शन मिलने के लिए भी थोड़ा टाइम लग रहा है सर. इट्स नॉट लाइक ओके हमारा सेल्स टीम का आपका मंथ ऑन मंथ पता है, क्वार्टरली पता है, बट OEM आप दिया तो उसका कंपनी के ऊपर और सेल्स टीम का अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और वो कैसे रिसीव कर रहा हूँ मशीन्स और प्रोडक्ट का डिटेल्स, इसके ऊपर इट विल टेक एटलीस्ट 1 साल से 1.5 साल तक लगेगा सर. वो धीरे धीरे वो डेवलप होने का टाइम भी है. सो ये सब ओके थोड़ा तो ये छोटा सा डिसएडवांटेज लगता है आपको OEM में मैन्युफैक्चर हो रहने का कि यू डोंट गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर. यू आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द पिलर्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर यू. मैं इस प्रश्न को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछना चाहता हूँ कि आप तो मैन्युफैक्चरर हो गए, आपके जो पार्टनर्स है बिजनेस पार्टनर्स मार्केटियर्स जो मार्केट करते हैं आपके ब्रांड को, या आप जिनको उनके नाम पर उनके ब्रांड बना के देते हैं, उनको एज ए मार्केटिंग कंपनी क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? ओके सो उनका फायदा बहुत ज़्यादा है सर. मतलब R&D एक्सपेंडिचर ही नहीं है. You have a ready-made product with everything done, right? And we promise OEM release in 30 days. हमारा off-the-shelf product आप लिया तो, right? नया mold नहीं चाहिए, existing mold ही चाहिए तो, then in 0 to 30 days हम दे सकते हैं, right? So the moment you decide, 30 days में आपका brand, अपना machine with all the high-end features आपका मिल सकते हैं, right? तीसरा आपका मशीन का सब इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, कमर्शियल इंफॉर्मेशन भी, वो इसका मार्केट क्या है, आपका कस्टमर कौन कौन है, वो मशीन किधर बेच सकते हैं आप, राइट? वो इसका मेरिट क्या क्या है, ये सब हम मार्केटियर को दे सकते हैं सर. वो एक एडवांटेजेस है. और पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट हम ये कमर्शियल पॉइंट के ऊपर हम उनका सिक्योरिटी भी होता है. मतलब हमारा OEM पार्टनर्स का बिजनेस रेवेन्यू, मतलब आप मशीन ले लिया, राइट? मशीन मार्केट में डालने के बाद आपको आपका मशीन का रिएजेंट दूसरा लोग सप्लाई किया तो कैसे लगेगा? करेक्ट. सो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट. उसीलिए हम एक IoT बेस्ड एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है हुआ है. और इसके अलावा RFID बेस्ड भी मशीन के ऊपर वो लगा देते हैं. हाँ, बट वो टेक्नोलॉजी है तो आपके पास, देन आपका मशीन आपका ही है, राइट? सो आई कैन नॉट सेल रिएजेंट्स टू योर मशीन्स. ओके. सो इसलिए वो लॉक होता है. इसका मतलब ऐसा हुआ कि जिस कंपनी की गाड़ी है उसी कंपनी का फ्यूल लगेगा उस कंपनी में. एग्जैक्टली. ओपन सिस्टम नहीं है कि मार्केट में कहीं पे भी जाकर आपने फ्यूल भरवा लिया. यस. गाड़ी भी बेचेंगे, फ्यूल भी बेचेंगे. करेक्ट. ये आपको एडवांटेज है. और आप बंडल किया तो फॉर एग्जांपल आप CBC बेच रहे हो, इसके साथ आप ESR बेच सकते हैं. सो यू विल हैव अ बेटर माइलेज बिकॉज़ आवर प्रोडक्ट्स आर वेरी मच अफोर्डेबल है और हाई टेक भी है, राइट? सो आपका मार्जिन भी अच्छा है, राइट? सो उसीलिए आप बंडल करके आप भेजा तो पैकेज डील्स किया तो देन आपका अच्छा वो नेगोशिएशन होता है ना सर. फॉर एग्जांपल मशीन का बड़ा मशीन में नेगोशिएशन होता है, राइट? वो आपका पास हमारा प्रोडक्ट है तो वो सॉफ्ट लैंडिंग हो सकता है. मतलब वो शॉक, मतलब वो नेगोशिएशन शॉक, ये प्रोडक्ट ऑब्जर्व किया तो देन बिल्कुल आपका फर्स्ट सेल्स आता है ना, उसमें आपको अच्छा से मार्जिन मिल सकता है. ओके. और इस नुस्खा डिसएडवांटेजेस है तो एक ही है MOQ, राइट? सो इसमें MOQ है बिकॉज विदाउट विच इट इज वेरी डिफिकल्ट. क्या होता है? मिनिमम ऑर्डर इन क्वांटिटी. ओके. उसके ऊपर भी हम काम करते हैं सर. कसनो वो मिनिमम ऑर्डर है बिकॉज वो लेबल्स बनाना है, राइट? और वो बैच भी अलग से हम मैन्युफैक्चर करना पड़ा है. सो उसीलिए वो मिनिमम ऑर्डर है तो देन वो
So easily this बन सकते हैं। MOQ is applicable only for the hardware or the consumables also? No, only for the hardware. Only for the hardware. Yes, Okay. yes, only for the hardware. Consumable भी हम it goes. It's with the minimum thing. Anyway, easily they will go. So it's Okay. not there in this. Okay, ठीक है. Okay, डॉक्टर मुथु, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय दिया. अब हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक बढ़िया संदेश दे दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए. Okay. So, sir, I recommend our viewers and our industry friends and the consumers to support local manufacturers. So, आप local manufacturers support किया तो local innovation भी होता है और innovation होने के बाद हम technologically हम advanced stages में सोच के वो products भी हम बन सकते हैं, right? So, उसीलिए we will have many more entrepreneurs coming up in this industry. So उसके वजह से हमारा industry भी बढ़ जाएगा और industry बढ़ा तो then हमारा देश का visibility in the global stage भी बढ़ जाएगा. So I with all due respect, please consume Indian products. Please support local manufacturers. Thank you. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुथु, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया और हमने इनसे ये सीखा और समझा कि आप चाहे कुछ भी, कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितनी ही विदेश यात्राएं की हो, आप सबसे पहले तो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बन जाइए. आप अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाइए कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट लेकर के इंडिया में प्रमोट कीजिए ताकि भारत की इकोनॉमी आगे बढ़े. और जो लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं वो अपनी अपनी लोकल गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं. जैसे कि ये तमिलनाडु के होकर के इन्होंने गुजरात की गवर्नमेंट को अप्रोच किया और गुजरात की गवर्नमेंट ने इनको काफ़ी अच्छा सहयोग दिया और वहाँ के एक बढ़िया से अच्छे मैन्युफैक्चरर बन के उभर रहे हैं और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं. तो मैं इसी के साथ डॉक्टर मुथु आपको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा. आपने अपना कीमती समय दिया. ये समय है मेड डिवाइस समय. यहाँ पे व्हाट हैपेंस कि वी गेट कनेक्टेड टू ईच अदर through this med device moment. Okay. You have spared your valuable time with us. Okay. Kindly accept this Thanks a lot, sir. from us. Thank you very much. Thank you. आप यहाँ आए.